इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम NPS अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। This program is sponsored by IEPFA, Informed Investor, Empowered Investor, Smart Investor। सुरक्षित कल के साथ साथ NPS आज आपको एक नया आत्मविश्वास भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी NPS से जुड़ सकता है। किसी भी POP जैसे बैंकों, NBFC के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना NPS खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए NPS जरूरी है। कॉपीपुर गांव के कॉपी कुमार, कॉपी करने का वे इनको बुखार। बादशाह, शहनशाह, चुलबुल या पीके रोज नए अवतार में दिखे। छोटे कभी लंबे बाल ये बना लें, जो टीवी पे देखे सब खरीद डालें। तेल, क्रीम, शैम्पू या चाय, जो हीरो बोले जनाब वही लगाएं। फिर एक दिन सबने देखा कुछ ऐसा, बोले कॉपी कुमार जहाँ हीरो ने बोला हम वहीं लगाएंगे पैसा। लुट गए शेयर, डूबा पैसा, बैंक बैलेंस हुआ जीरो। सब बोले क्यों भाई, अब क्या कहता है तेरा हीरो? सिर्फ किसी सेलिब्रिटी, ब्रांड एम्बेसडर या नामी व्यक्ति के मोह में आकर निवेश न करें। कंपनी पॉलिसी ठीक से समझें और अपना पैसा सोच समझ कर लगाएं। देर लगी पर कुमार ने सीखा सबक जैसे तैसे कि हीरो के कहने में आकर ना लगाएं पैसे। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I am Anubha Rohadgi and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर है मार्केट मंत्र के एक और ताज़ा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही बात करेंगे प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों की। और खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में उपलब्ध है मार्केट एनालिस्ट पुनीत जैन। पुनीत, आपका मार्केट मंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हर्ष। शुरू करते हैं मार्केट मंत्र। सबसे पहले हेडलाइंस इंग्लिश में। Thank you, Harsh. Nation is celebrating 75th Republic Day today. Nari Shakti showcased in the parade. Asian markets closed with mixed cues. US markets ended in green. And solid cues from US and China push oil prices. Brent crude trades above $81 mark. राष्ट्र आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर हुए मुख्य परेड में नारी शक्ति केंद्र में रही। एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख, जबकि अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में मजबूती। और अमेरिका और चीन के बेहतर आर्थिक आंकड़ों की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त। ब्रेंट क्रूड $81 के पार हुआ। The nation is celebrating the 75th Republic Day today. President Draupadi Murmu led the nation in celebrating Republic Day from Kartavya Path in New Delhi this morning. French President Emmanuel Macron was the chief guest at the parade, which showcased India's rich cultural diversity, unity and progress, its military prowess and the growing Nari Shakti. Based on the twin themes of Viksit Bharat and Bharat Loktantra Ki Matrika, this year's parade witnessed participation of around 13,000 special guests. The initiative provided an opportunity for people from all walks of life to take part in the celebrations and encourage Jan Bhagidari in this national festival. As per tradition, the national flag was unfurled, followed by the national anthem with a booming 21-gun salute. 4 Mi-17 4 helicopters showered flower petals on the audience present at the Kartavya Path. This was followed by Abhan, a band performance by over 100 women artists playing various types of percussion instruments symbolizing Nari Shakti. For the first time ever, the Republic Day parade heralded the women artists playing Indian musical instruments. It commenced with the music of Shankh, Nadaswaram and Nagada played by these women artists. In the parade, an all-women tri-service contingent also marched down the Kartavya Path. Puneet, the 75th Republic Day and our chief guest today was the French President Emmanuel Macron. When I talk about it, talking about India-France bilateral relationship, if we look at it from an economic point of view, from a trade point of view, we are still, I was reading somewhere that India-France bilateral trade in 2022-23 was $19.2 billion US, whereas India is France is India's 8th largest trading partner and the 11th biggest investor, FDI investor. Whereas if we talk about China,
France is China's third largest trading partner in the EU, with a total bilateral trade of 78.9 billion US dollars in 2023. How do you see this when we compare, and what is it required to encourage this, to take this forward? So, Anubha, in fact, the bilateral relations between India and France, they don't have to be seen only through the prism of economic size of the trade that we have, or size of relationship we have. I think India and France share a very strategic relationship over many, many years. In fact, in all times of crisis that India had in past, France has been one country which has really stood by us in under all circumstances. And the instance which comes to my mind at the ready is 1998, when we tried, when we had nuclear tests, and the whole world, they kind of went against, was looking at sanctions against India, and India was kind of isolated. And even at that time, France stood by India, and they provided us some critical supplies of uranium and nuclear material, etc. And they supported India in coming back to the main stage in the world affairs. So I think France's role in standing by India in all situations is very, very important, and I think we as Indians, we value that a lot. Of course, the trade that we have with France, interestingly, is mostly defense oriented. So while the number that we look at, it may not be very large. So if you look at other countries, we have larger trade numbers. In fact, the largest trading partner is China. Yes. But look at China. Where we stand vis-a-vis China in strategic relationships and the kind of long-term relationship we can have with China. I don't think India really has that kind of long-term outlook right now. But if you look at France, most of our trade is related to defense, critical technologies in defense and energy. In fact, French companies, they have been at the forefront of providing energy security to India, whether nuclear plants were there, civil nuclear technology satellite launches. So I think, so when I look at France's relationship with India, I take all these into accounts, and I think it's a very, very important relationship, and the present government has done extremely well to nurture this relationship now to a level where it has taken that strategic shape for us. और हाल के वर्षों में अगर पुनीत देखें तो भारत ने डिफेंस उत्पादन में, डिफेंस के साजो सामान बनाने में बहुत तरक्की हासिल किया है. जहां हम पहले बाहर से सिर्फ आयात करते थे, आज हमारी स्थिति यह है कि कई देशों को हम कई सारे सामान निर्यात कर रहे हैं. तो अगर इस हिसाब से देखें और इसे मार्केट से रिलेट करें, तो क्या ये सही वक्त होगा डिफेंस से रिलेटेड कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करने का? देखिए, हाँ बिल्कुल, अगर इसको मैं पूरा जोड़ता हूँ जो आपने बात कही, और एक डिफेंस का शेयर है जो आप सभी हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो कि पिछले एक वर्ष में करीब 6 गुना उसमें बढ़त आई है, और वो जो एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, पर्टिकुलरली अब फ्रेंच जो खास फाइटर जेट है राफेल, हम सब जानते हैं, और वो सबकी शान है, मैं कहूँगा भारतीयों की, ना सिर्फ इसलिए कि एक अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त वो एक लड़ाकू जहाज है, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उसको हम उसके कई सारे पार्ट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम उसको भारत में ही बनाएंगे और भारत से एक्सपोर्ट भी करेंगे. तो जैसे आपने कहा कि तो ये काफ़ी एक ऐसी रिलेशनशिप जो सभी देशों को, फ्रांस को भी और इंडिया को भी, काफ़ी म्यूचुअली बेनिफिशियल है, और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत ज़बरदस्त है मेरी समझ में. Talking about the markets, Puneet, this week we saw a lot of volatility in the markets. Markets went up, then they were down. And in fact, yesterday they closed 100 points, almost 100 points. Sensex closed down 100 points. So what is it that's been happening? Because one day you see markets, going up more than 1%, and then the next day they are ending in the red. What has been happening here, and how do you see the coming weeks? So Anubha, typically what we see is that when markets are whenever there's a long-term trend. So if you look at, let's say, beginning 2020 end and 2021, we saw the markets turned higher after the lockdowns were lifted, and there was a one-way upside to the market. Markets have gone up almost 150%, and almost from the bottom of about 8,000 Nifty, we are now at about 22,000 Nifty. So markets have taken this huge run-up, and typically we find that either when the markets, they're at the new highs, there's a lot of indecisiveness. Some investors feel bearish, some investors are still bullish. So there's a lot of back and forth as far as buying and selling is concerned. And I think that is what is happening. The market is trying to find some direction. And a lot of
people who may have doubts about the rally, they are selling right now. Some people they buy, and as you know, FIs have been big sellers in this market lately. So all that is happening. So domestic investors are very bullish, foreign investors are somewhat bearish. So it's kind of a confluence of all these influences happening right now. मार्केट को आपका कहना है कि एक डायरेक्शन, एक दिशा की जरूरत है. मार्केट का क्या वैल्यूएशन है इस समय, सारे स्टॉक्स के क्या वैल्यूएशन है, हम इन सब पे चर्चा करेंगे. लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं. सुरक्षित सेवानिवृत्ति के साथ साथ एनपीएस आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने में भी मदद करता है. 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है. किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं. सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है. ब्रेक के बाद मार्केट मंत्र में आपका एक बार फिर स्वागत है. और हम बात कर रहे थे इंडियन स्टॉक मार्केट्स की पुनीत जैन एक्सपर्ट के साथ, और उनका ये कहना था ब्रेक के पहले कि मार्केट को एक दिशा की अभी ज़रूरत है, क्योंकि जहां कुछ लोग बेयरिश फील कर रहे हैं वहीं बहुत से लोग बुलिश फील कर रहे हैं. कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कुछ अभी भी मार्केट में घुस रहे हैं. लेकिन एफपीआईज जो हैं वो अभी नेट सेलर बने हुए हैं. ऐसे में पुनीत, हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये, जहां हम एक आम निवेशक को निवेश की सलाह देते हैं, ट्रेड करने की सलाह नहीं देते हैं. हमारा मकसद मार्केट मंत्र के इस प्लेटफॉर्म पर यही होता है कि लोग पैसे अपने गंवाए नहीं बेवकूफ़ी में. ऐसे में एक आम निवेशक जो है ये मार्केट में क्या करे, घुसे, बना रहे, प्रॉफिट बुक करे या म्यूचुअल फंड के माध्यम से घुसे? देखिए हर्ष, मैं ये कहूँगा कि और ख़ास तौर से जो कि मार्केट मंत्रा के जो श्रोता हैं वो रिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटे निवेशक हैं, और वो इस बाज़ार में उनका जो एंट्री है वो चाहे वो थोड़े समय पहले हुई हो, लेकिन वो फिर भी एक, मुझे लगता है कि उनका रिस्क जो एपिटाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. वो इसको मैनेज करके चले. मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर हम भारत की इकोनॉमिक स्टोरी को देखें एंड वी लुक एट इंडिया स्टोरी, देन इट इज़ वेरी गुड इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स. तो अगर आपको आज आप निवेश करते हैं और आपको थोड़ा नीचे जाने में 20-30% करेक्शन में आपको चिंता नहीं होती, और आप वहाँ पर भी निवेश करने की क्षमता रखते हैं, यानी आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है शॉर्ट टर्म में, तो आप आज भी निवेश अपना बनाए रख सकते हैं. अगर आप निवेशक हैं, आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं. आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें डिप्स पर, वो भी कर सकते हैं आप. लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस समय बाज़ार में एलिवेटेड रिस्क है. रिस्क तो है वो ज़्यादा है, करेक्शन आ सकती है बाज़ार के अंदर, क्योंकि हमने 3-4 वर्षों में बहुत तेज़ी देखी है. और यदि आपकी एपिटाइट उतनी नहीं है, यदि आपको लगता है कि आप कोई बड़ा झटका अभी सहन नहीं कर सकते या नहीं चाहेंगे आप, या कैपिटल को प्रिजर्व करना आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं कहूँगा कि इस समय थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और उसको निवेश न करें, थोड़ा इंतज़ार करें मार्केट वैल्यूएशन नीचे आने का. अभी जो मार्केट में जो जैसे हम रिस्क प्रीमियम कहते हैं इंडियन मार्केट का, वो हाईएस्ट है पिछले 10 वर्षों में. यानी जो दुनिया का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है उसके ऊपर जो हमारा पी मल्टीपल है वो बहुत ज़्यादा है. दैट गैप इज़ टू मच. अभी हम 23 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल है निफ्टी का, अगर हम पिछले 12 महीने की अर्निंग्स को ध्यान में रखें. और ये आम दुनिया का ये पी मल्टीपल अभी 14 to 15 टाइम्स है. यानी हम करीब आप कह सकते हैं 40 से 50% ज़्यादा वैल्यूएशन ज़्यादा है. तो ऐसे समय में कभी कभी झटका आ सकता है बाज़ारों में. तो मुझे लगता है कि अगर आपका रिस्क एवर्जन है, थोड़ा रिस्क आप नहीं लेना चाहते, तो कुछ प्रॉफिट यहाँ पर बुक करना एक समझदारी की बात होगी. और फिर हम इंतज़ार करें थोड़े टाइम, मौका ज़रूर मिलेगा. देखिए, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी को खास तवज्जो नहीं देनी चाहिए, लॉस ऑफ कैपिटल नहीं होना चाहिए. तो लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी हुए तो कोई बात नहीं, हमको कैपिटल लूज नहीं. ये आपने बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही अनुभव, कि लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी है तो वो आप फिर ले सकते हैं या कई जगह तलाश कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉस ऑफ कैपिटल होता है तो फिर अपॉर्चुनिटी रहने पे भी आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे. बिल्कुल. And talking about loss of capital, and Puneet, you said that our listeners, most of our listeners are retail investors who may not have a very big risk, appetite for taking risk. So given that kind of a scenario, what are the sectors you feel, we talked about, of course, the defense sector right now, the prospects of the defense sector, but what are the other sectors where, they can invest if they do not have a very big risk appetite? So, Anubha, I wish I had that list with me, but if you look at the many top 20 or 30 companies, including HDFC Bank, Hindustan Unilever, I'm giving you these big names, Bajaj Finance, these are very big companies. Among the top 100 companies of India, you will find that these companies are trading at less than 52-week lows.
They are below 52-week lows now. So these companies have not gone up at all in the last 3-4 years. They are now very attractively priced. Many of them are attractively priced. In fact, much of so many companies, you will find that large caps, they are attractively priced. And much of this rally actually has been vis-a-vis the small caps. Yes. And very concentrated in certain high risk companies. So I would say that this may be the time when investors could rotate from high risk sectors to the low risk sector, large caps, so to say. So that is one possibility of protecting your capital. And like you said, because the mid cap and the small cap indices have been performing relatively better than, if you look at a comparison, than the large caps. So maybe they if they do a research, the investors and there's plenty our of research available, but they should always take professional help. I would suggest that retail investors should not try and take risk on their own. They should read a lot. They should invest a lot of time. See, unfortunately, I just small piece of advice here, because a lot of investors that they want to make quick money, and they don't want to invest any time in it. They want to invest money but no time. I would say in the markets you need to invest a lot of time and effort first, and after that you invest your money, and not the other way around. और एक नज़र डाल लेते हैं पुनीत की बाकी आज तो भारत के बाजार बंद रहे क्योंकि गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। एशियाई यूरोपीय बाजारों का क्या हाल रहा, तो एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा है, जहां चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.1% बढ़ा, वहीं सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स और दक्षिण कोरियाई बाजार के कॉस्पी में 0.3% की दोनों बाजारों में बढ़त दर्ज की गई है। लेकिन हांगकांग का हैंगसेंग 1.6% और जापान का निकेई सूचकांक 1.3% गिरे हैं। यूरोपीय बाजारों में अभी कारोबार चल रहा है, बढ़त बनी हुई है। फ्रांस का कैक 42% बढ़ा है, जबकि लंदन का FTSE 100 1.2% और जर्मनी का डैक्स मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। और इसी के साथ अनुभव से हमारी गुजारिश होगी कि यूएस मार्केट का क्या हाल रहा, बता पाएंगे? जी जरूर। All three major US indices witnessed gains yesterday. The Dow Jones Industrial Average surged 0.6%, the Nasdaq Composite Index gained 0.1%, and the S&P 500 rose 0.5%. Puneet, talking about whether these are the Asian markets or the US markets, it's a global economy, it's a global village. Anything that happens anywhere else impacts markets. So the way the markets have been behaving, the US markets we've been seeing are doing relatively well. What are the reasons behind it, and now how can they impact? How can the US markets and the Asian markets impact the Indian markets? So, Anubhav, one of the biggest surprises, I would say, of 2023 was the resilience of US economy. In fact, yesterday only data came out for growth in US GDP, and US GDP grew by 3.3%. Now, this is huge. I mean, even in the best of times, US GDP would grow barely at 2% or something. And we must remember that now the US GDP is close to $20 trillion. So at $20 trillion, if they can manage to grow at 3.3%, you see the kind of value or kind of money they are generating. So I think the US markets being not only the economy being the largest, the markets being the largest, and the amount of the US dollar being the reserve currency. I mean, all this is together creating a huge sense of stability in the world markets and world economy. And I think that has been the greatest achievement. And if in 2024 we can see what is the fabled soft landing in USA, because we've only heard about it and we've rarely seen soft landing, where inflation comes down but the economic growth does not come down. That is called soft landing. In last 100 years it has not been achieved, but there appears to be a possibility it may be done. So I think that will be a great achievement, and that will be something to watch out this year. And anyways, it's an election year for US just like us, so a lot would depend on the next dispensation that comes in, what administration that comes in. Markets would also be looking to that, and election years in USA, as any other country, are extremely fraught with a lot of doubts, I would say. So US market is also going to go through a lot of volatility, I suspect. And my own sense is that overall I think markets will be doing better in USA, but the first half of the year, the next 6 months, I would say, are going to be very volatile. I want to ask you about the Chinese economy as well, because China, just last week we saw that India has overtaken, of course, Hong Kong in terms of market capitalization, the Indian stock market, and that's one of the reasons being said is because of the the struggles the Chinese economy has been facing, the kind of regulations they have been, the administration imposed on the corporations and various other factors. But
Just last week, there was this, in fact, this week only, there was this news that now the government is thinking of infusing some, giving some sort of a package to uplift their markets. So how do you see the Chinese market, and how do you see China, in the next few days? So Chinese regulators did try some tricks yesterday. In fact, they've cut what is called the CR, the cash reserve ratio for Chinese banks in an effort to kickstart the economy. And although they came out with the official figure of 5% GDP growth last week, but like everybody knows, they suspect the credibility of that data. And with China, one of the reasons is that they keep coming out with this data which is not relied upon by investors worldwide. They are very suspicious of Chinese data. And what we have seen is that China's efforts, in fact, they are discussing a $280 billion bailout package for the Chinese markets. But see, the investors are not confident. You may put the government money in stock markets, but stock markets don't run on government money. They run on the confidence of investors. Yes. And the truth is that China has lost that confidence of investors through a series of actions they took in the last 7-8 years. So I think it's going to be a very uphill task. I like to point, just to underline the problem in the market is the Hang Seng Index, the Shanghai Index, the two major indices on China, yes, today are lower than what they were in 2007. So from 2007 till date in India, we have gone up by more than 4 times. And in China, their stock markets are still lower than where they were in 2007. So you can imagine the problem in China. They are not able to translate the size of their economy into gains for the businesses or for the investors. But at the end of the day, it's the second largest economy in the world. It's, you just cannot write it off. No, I'm not saying you can write it off. What I'm saying is that China has not been able to capitalize. There was a belief that at one time China will overtake the US economy. Only today, Goldman Sachs came out with a report saying that now they are very doubtful that's not going to happen. और आपने बहुत अच्छा कहा कि 2007 से हम 4-5 टाइम्स ज़्यादा हैं. 2008-9 से अगर देखें तो हम लगभग 9 टाइम्स ज़्यादा हैं. बिल्कुल. आपसे चर्चा करेंगे. आपने जो सॉफ्ट लैंडिंग की यूएस में बात की, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा और ब्रेक ले लेते हैं. अच्छे रिटर्न के साथ साथ एनपीएस आपका आत्मसम्मान भी सुनिश्चित करता है. 18 से 17 सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है. Welcome back to Market Mantra, where our guest today is market analyst Puneet. Puneet, and before we continue with our discussion, let's hear how the rupee behaved today. हाँ, ये बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया क्या रहा, इस पर ही तो सारा इन्वेस्टमेंट डिपेंड कर रहा है दुनिया में. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 83 रुपए 12 पैसे के स्तर पर रहा. 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में थोड़ी सी मंदी दर्शाता हुआ 103.44 पर था. Puneet, since we're talking about the markets, and the interim budget is just around the corner, it's going to be next week. What are the market expectations from this budget? So, Anubhav, in fact, interim budgets are limited in the scope because the government cannot take any long-term steps there, but they can do within those constraints. Within those constraints. So I think there will be some rationalization vis-a-vis taxation for because see, budget of course is about revenues and expenditure. So we know that the revenues have really gone up in last 7-8 years through economic reforms by the government. The expenditures has also been very strong. They have spent a lot of money on infrastructure. Yes. It is beginning to show up in GDP numbers now. However, I think we still have room for further reforms in taxation. Already in indirect taxation there have been a lot of reforms. There's been a lot of talk of reforms in the capital gains taxation structure because it's very confusing at present. Yes. And government might streamline it. But I think most of that will happen in the final budget which will come after the elections. But in the meantime, I still believe that the finance minister would like to give some relief to the middle classes, to the people in the lower tax brackets, and I think that will be really welcome. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज सोने की कीमत प्रति औंस $2,038.80 रही है. चांदी की कीमत में भी प्रति औंस $23 की बढ़त दर्ज की गई है. लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की क्या कीमतें रहीं, यूएस और चाइना के जो इकोनॉमिक डेटा हैं वो क्या कह रहे हैं और कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए हमें अनुभव के पास जाना होगा. Sure.
Harsh. Solid economic growth figures from the US and news about China's economic stimulus combined this week to push oil prices higher. The benchmarks could post their biggest weekly rise since October this week, with supply uncertainty in the Middle East contributing to the bullish sentiment. In intraday trade, Brent crude was trading at $81.82 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was trading at $76.76 per barrel when reports last came in. Again, Puneet, oil prices just 2 days ago, it was below $80. Now it's so it's in the range of, we're seeing that, a little below 80 or sometimes going above 80. And everything is, it's again tied to what is happening in China, what is the geopolitical situation. How do you see that? Where do you see the oil prices going and in the coming days? So, Anubha, clearly oil prices is very difficult to predict because it depends on two factors which are very completely unpredictable. One is the geopolitical situation in the Middle East, which is happening. So we don't know whether there will be disruption in trade in the Middle East and therefore through the Red Sea, and that could affect oil prices. And there is no way that we can predict what will happen tomorrow. So uncertainty is sure. Secondly, the demand which is coming down in China, because Chinese economy is definitely slowing down. We have clear signals to that, and I think that would have ideally pushed down the oil prices. But geopolitical uncertainty is what is pushing them higher. So they are kind of balancing each other right now. We will know in next few months. And volatility is the nature of the market, be it the stock markets based. Yeah. But see, clearly in the shorter term, we are always uncertain. Whereas human tendency is to overestimate the ability to predict short term. The truth is that we do not know anything about short term. Longer term, we are more clear. But I think. और आने वाला सप्ताह पूरी तरीके से बजट का सप्ताह रहेगा. मार्केट तो 2 दिन बंद है. 30 तारीख को यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग भी है. हाँ, 30 को मीटिंग भी शुरू होगी, तो वो बड़ा एक क्रिटिकल. और आपने जैसा कि कहा सॉफ्ट लैंडिंग में और यूएस फेड और जैक्सन होल का जो रिलेशनशिप है, वहां पर इंटरेस्ट रेट का जो भी फैसला आएगा या जो इंडिकेशन होंगे बड़े महत्वपूर्ण होंगे. और यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाना है. तो बहुत महत्वपूर्ण वीक है. तो ये वीक में 2 फैक्टर्स काम करेंगे. एक तो यूएस फेड अपनी बैठक में क्या फैसला करता है इंटरेस्ट को लेकर, और दूसरे की जो अनुभव ने भी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि बजट से क्या मार्केट को उम्मीदें हैं. इकोनॉमिक सर्वे से भी क्या आपको उम्मीद लग रही है पिछले साल? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे तो जो हमारी अचीवमेंट्स है वो उस डेटा को हमारे सामने लाता है और आगे की पॉलिसी के लिए सजेशंस देता है. तो मुझे लगता है जो भी आंकड़े हमारे सामने हैं रेवेन्यू कलेक्शन के, बहुत सॉलिड आंकड़े हैं, बहुत अच्छे आंकड़े हैं और उम्मीद से बहुत बेहतर है. तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी डायरेक्शन देंगे. Thank you so much for this discussion, Puneet. Thank you so much for coming to our studio. And that's all we have time for, unfortunately. We cannot take this discussion any forward. So once again, thank you. Thank you. And before we close, a reminder of the headlines. Nation is celebrating the 75th Republic Day today. Nari Shakti showcased in the parade. Asian markets closed with mixed cues. US markets ended in green. And solid cues from US and China push oil prices. Brent crude trades above $81 mark. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. Do tune in at 6:30 to listen to another edition of Market Mantra. Till then, goodbye. Namaskar. Namaskar. कॉपीपुर गांव के कॉपी कुमार, कॉपी करने का भाई इनको बुखार. बादशाह, शहनशाह, चुलबुल या पीके रोज नए अवतार में दिखे. छोटे कभी लंबे बाल ये बना लें, जो टीवी पे देखे सब खरीद डालें. तेल, क्रीम, शैम्पू या चाय, जो हीरो बोले जनाब वही लगाएं. फिर एक दिन सबने देखा कुछ ऐसा, बोले कॉपी कुमार, जहाँ हीरो ने बोला हम वहीं लगाएंगे पैसा. लुट गए शेयर, डूबा पैसा, बैंक बैलेंस हुआ 0. सब बोले क्यों भाई, अब क्या कहता है तेरा हीरो? सिर्फ किसी सेलिब्रिटी, ब्रांड एम्बेसडर या नामी व्यक्ति के मोह में आकर निवेश न करें. कंपनी पॉलिसी ठीक से समझें और अपना पैसा सोच समझ कर लगाएं. देर लगी पर कुमार ने सीखा सबक जैसे तैसे, कि हीरो के कहने में आकर ना लगाएं पैसे. IEPF अथॉरिटी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी. आपकी आजादी के साथ साथ एनपीएस आपके आत्मसम्मान का भी ख्याल रखता है. 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है. किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं. सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है.
This program is sponsored by IEPFA, Informed Investor, Empowered Investor, Smart Investor. इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।